Chief Minister D.K. Shivkumar unveiled the Pyari Didi scheme aimed at providing financial assistance to women as part of party's campaign ahead of the Delhi elections. Now, this scheme, which will provide a monthly allowance of Rs 2,500 to women of the national capital, has surpassed the ruling Aam Aadmi Party's Mukhyamantri Mahila Samman Yojana, the cash scheme guarantee of providing Rs 2,100 monthly to the women of the national capital. With the poll dates for the upcoming Delhi elections approaching, now the rift in India bloc is evident, with the Congress party now hitting out at the Aam Aadmi Party over the poll guarantees and saying that only Congress could deliver on the promises made in the elections. Now, Karnataka Deputy Chief Minister D.K. Shivkumar further added that there was no guarantee of the Delhi Chief Minister. Listen in to the war of words. No, both of them are our enemies. Politically, only Congress party, which has a history, can do better. We have an history. Whatever we speak, we deliver. Even from the days after democracy came and India got independence, from that day, whatever our leaders, from the day of Pandit Jawaharlal till Manmohan Singh ji, everything we promised to the country, we have delivered. कांग्रेस का खटाखट मॉडल कर्नाटका में 15% बस फेयर्स बढ़ाने के बाद अब दूध के दाम, मेट्रो के दाम और पानी के दाम भी बढ़ने वाले हैं। जी हां, वादा किया था कि हम सब कुछ फ्री देंगे, पर ये लूट और झूठ की सरकार है। झूठे गारंटी करके सत्ता में आए, अब लूट रही है। यही है खटाखट मॉडल और यही चीज कांग्रेस हिमाचल में भी करती है। वहां पर भी बड़े बड़े वादे किए, 1500 रुपए देंगे, 300 यूनिट फ्री देंगे, और वहां पर बैंकरप्सी कर दी, सैलरी पेंशन नहीं दे पा रहे, होटल्स बिकने की कगार पर है। तेलंगाना में भी सेम स्टोरी।